अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रेनिंग 101 के क्लिप में स्टेप बाय स्टेप गाइड क्रिएटिंग अ वीडियो विद ऑडियो यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि जी आपके सामने इस तरह से एक स्क्रीन आ जाएगी जब आप पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। और उसके बाद आपने जब अपना मुकम्मल कर लेना है तो आपने रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड लिखा हुआ है। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से मेन्यू आ जाएगा जिसमें लिखा होगा फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम बिगिनिंग। अच्छा, जाहिर है कि अगर आप एक ही नशिस्त के अंदर तमाम रिकॉर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक फ़्लो में आ जाएगी। लेकिन बाज़ दफ़ा होता ये है कि कुछ बच्चे तंग करते हैं, तो उसके लिए फिर ये है कि आपने स्लाइड जहाँ पे रुक जाए वहाँ पे रोक दीजिए आप उसको। और फिर फ़र्ज़ कर लें कि फिफ्थ स्लाइड थी तो फिफ्थ स्लाइड पे जाइए और उसके बाद उसको जब आप क्लिक करेंगे करंट स्लाइड के ऊपर तो वो फिर वहीं से रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। सिंपल ये है कि अगर आपके पास 10 स्लाइड्स हैं तो आप उन्हें एक एक करके भी 10 दफ़ा रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर सवाबदीद पर है कि आप उनको किस तरह से लेते हैं। आप एक ही नशिस्त में कर लेते हैं या बार बार करते हैं या ब्रेक करके करते हैं, तो इसमें इतना इशू नहीं है इसके अंदर। फिर जब आप बिगनिंग पे या जब कर लेंगे आप इसके अंदर, तो फिर जब मुकम्मल हो गया आपका तो आपने एक्सपोर्ट टू वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक नई स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर आपने क्रिएट वीडियो के ऊपर आपने इसको क्लिक कर देना है। और जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही फाइल का नाम आ जाएगा कि आपने किस नाम से सेव करनी है। तो मैं आमतौर पर वही पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है, जो उसका नाम होता है, उसी नाम के ऊपर उसको सेव करता हूँ ताकि आगे जाकर कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे पता लग जाए कि ये क्लिप है और ये इसकी पावर पॉइंट थी, तो ये मुझे मिलने में आसानी हो जाती है। अगर आप चेंज करना चाहें नाम तो चेंज कर सकते हैं, कोई मजायका नहीं है इसके अंदर। तो जब आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक दोबारा वहीं पे आ जाएंगे आप अपनी स्लाइड्स के ऊपर। और आप ये देखिए कि यहाँ पर आ, इस जगह पर ये प्रोग्रेस शो कर रहा है कि आपकी जो वीडियो जो है वो क्रिएट हो रही है। और जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो ये सारी बार जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको ना एक क्लिप दिखाऊंगा। क्लिप में से एक शॉट लिया है मैंने जो कि ब्लूम टेक्सोनोमी का है, और वो एक फाइनल शेप के अंदर जो क्लिप मैंने अपलोड किया था उसकी जो हैयत है वो दिखाई गई है उसके अंदर। The original Bloom's taxonomy in 1956 knowledge the ability to recall specific and universal methods and process or pattern, structures and setting refer to the recall of facts, definition or concepts. At this level, students simply memorization information. For example, reciting a math formula or historical dates. Comprehension: an individual knows what is being communicated to them and can utilize the material or idea without relating it to other material or understanding all of its implications. Involves understanding what is being communicated and being able to explain or interpret it. Explaining the meaning of the story is its own words. Application: the ability to use abstraction in specific concrete situation using knowledge in new situation, for example solving a math problem using a learned formula. Analysis: breaking down communication into its constituent elements apart, clarifying the hierarchy of ideas or relationship between them, breaking information into parts to understand relationships. For example, analyzing the motive of character in a novel. Synthesis: putting together elements and parts to form a whole, combining parts to form a new whole, producing original thought or products. For example, writing an essay by combining various ideas from different sources. Evaluation: the ability to make judgment without material's value and method for specific purposes.
Making judgment about the value of ideas or materials based on criteria or standards. For example, judging whether a scientific experiment was valid. अब मैं उसी क्लिप को दिखाता हूँ कि जब उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। ठीक है, जो पहले वाली जो फाइनल देखी उसके अंदर आप देख रहे हैं कि कम से कम लिखा हुआ था, लेकिन अब जो आप देखेंगे तो अब आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा मवाद मिलेगा। The original Bloom's taxonomy in 1956 knowledge the ability to recall specific and universal methods and process or pattern, structures and setting refer to the recall of facts, definition or concepts. At this level, students simply memorization information. For example, reciting a math formula or historical dates. Comprehension. An individual knows what is being communicated to them and can utilize the material or idea without relating it to other material or understanding all of its implications. Involves understanding what is being communicated and being able to explain or interpret it. Explaining the meaning of the story is its own words. Application. The ability to use abstraction in specific concrete situation using knowledge in new situation, for example, solving a math problem using a learned formula. Analysis. Breaking down communication into its constituent elements apart, clarifying the hierarchy of ideas or relationship between them. Breaking information into parts to understand relationships. For example, analyzing the motive of character in a novel. Synthesis. Putting together elements and parts to form a whole, combining parts to form a new whole, producing original thought or products. For example, writing an essay by combining various ideas from different sources. Evaluation. The ability to make judgment without materials value and method for specific purposes. Making judgment about the value of ideas or materials based on criteria or standards. For example, judging whether a scientific experiment was valid. अच्छा, सवाल ये है कि क्या स्क्रिप्ट ज़रूरी है? यस, ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जब आप उसको अपने पास लिख के रख लोगे तो आपको मालूम है कि मैंने क्या बोलना है। उसमें फिलर गैप्स नहीं आएंगे, इस तरह की आवाज़ें नहीं आएंगी, आप डायरेक्ट बोलते रहोगे, जो आपने लिखा हुआ वही आप बोलोगे। ठीक है ना? मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत ज़हीन हैं और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं और आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद कोशिश करें कि आप इसको लिख लें, तहरीर कर लें अपने पास। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको देखते हैं।